Alright students, today we are diving into something very important and that is Phylum Nematoda. This is your practical class where roundworms will become crystal clear to you from real specimen identification to understanding their structure, adaptation and importance. Everything is coming your way in the most simple and exam focused method. No more confusion, no more boring theory. This is learning with clarity, speed, and confidence. So grab your notebooks, stay focused, and get ready because by the end of this class, you will master Nematoda like a topper. Outlines in today's practical class on phylum Nematoda, we are going step by step. First, we will explore general characteristics. What makes roundworms unique and different from other groups? Then we move to classification, breaking nematoda into clear, easy categories so you never get confused in exam. And finally, the most important part, select a specimen. You will learn how to identify, understand, and draw them perfectly for your practical and viva. So stay focused because this class is designed to make nematoda super easy to pass an exam with. Practical outcomes. By the end of this practical, you are not just learning nematoda, you are mastering it. You will be able to identify key nematodes like Ascaris, instantly understand their structure, and draw perfect label diagrams in exams. Not just that, you will confidently use microscope to spot important features and even compare nematoda with other phyla. Thus, we will cover their medical importance so you know exactly how they impact your life. So stay focused till the end. Phylum Nematoda, also known as roundworms, nematodes, or eelworms. Did you know around 28,000 species have already been identified and counting? These organisms are unsegmented, cylindrical, worm-like animals, simple in structure but extremely successful in nature. And here is a key point. Their body shows dorsal and ventral nerve cord, which is crucial for understanding their nervous system. So don't just memorize, understand these features clearly because this is where most students lose their marks. General characteristics of nematodes. They are widely distributed. You will find them everywhere, water, soil, inside hosts, both free living and parasitic. Second, their body is elongated, cylindrical, unsegmented, and tapered at both ends. They have classic round worm shape. Tapered at both ends का मतलब है कि माउथ के साइड वाला एंड और इसी तरह टेल साइड वाला एंड दोनों जो एंड है इनके बॉडी के वो पॉइंटेड होंगे. पॉइंटेड मीन सुई की तरह तेज होंगे. थर्ड, दे आर ट्रिप्लोप्लास्टिक with well developed body cavity more advanced than फ्लैट वॉर्म्स. प्लेटिहेलमिन्थ से इनकी जो क्यूविटी है वो ज्यादा एडवांस है. फोर्थ, दे शो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन विच मीन्स systems are properly developed. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म थे प्रोटोजोआ में, उसके बाद पोरेफ्रा में सेलुलर ग्रेड ऑफ लाइफ बन गया. फिर जब हम सिलिंट्रेट में गए तो वहां पर टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन था. फिर जब हम प्लेटिहेलमिन्थ्स में गए तो ऑर्गन बन गए. लेकिन यहाँ पर अब ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है. सो हम कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ जा रहे हैं और जो सिस्टम्स है वो डेवलप हो रहे हैं. और द फिफ्थ वन, their body is covered with thick flexible cuticle, sometimes with spines or involutions. Very important features for these organisms क्योंकि ये पैरासिटिक होते हैं ज्यादा और एनिमल्स की बॉडीज के अंदर रहते हैं तो वहां पर जो डाइजेस्टिव जूसेस है उनसे बचने के लिए इनके ऊपर ये थिक और फ्लेक्सिबल क्यूटिकल का होना बहुत ज्यादा जरूरी है. Their cuticle is periodically molted. Yes, they actually shed it as they grow. तो हर साल जब ये ग्रो करते हैं तो अपने क्यूटिकल को मोल्ड कर देते हैं, शेड कर देते हैं. They have essential epidermis, which means nuclei are not separated by membranes, which is very unique feature of these creatures. जिस तरह एपिडर्मिस में अलग अलग सेल होते हैं प्रॉपर, हर एक सेल मेम्ब्रेन में बंद होता है, तो यहाँ पर इनका जो एपिडर्मिस होता है वो ऐसा नहीं होता.
बल्कि इनका एक कॉन्टिन्यूअस एपिडर्मिस होता है जिसमें कॉन्टिन्यूअस साइटोप्लाज्म होता है और उसके अंदर न्यूक्लियाई मौजूद होते हैं. So it's not just like a regular epidermis. It is known as essential epidermis. Only longitudinal muscles are present in these worms. तो इनमें वो सर्कुलर मसल्स नहीं होते, ओनली लॉन्गिट्यूडनल मसल होते हैं. दैट्स व्हाई देयर मूवमेंट इज थ्रेशिंग एंड whip लाइक. चाबुक की तरह इनकी मूवमेंट होती है. तो जिस तरह चाबुक मूवमेंट करता है whip लाइक, तो इसकी साइड वाइज कोई मूवमेंट नहीं होती है. दे लेक अ ट्रू सीलोम, इंस्टेड दे हैव अ सीडोसील. तो इनमें ट्रू सीलोम नहीं पाया जाता बल्कि इनकी सीलोम को सीडोसील कहा जाता है, which is not yet a complete coelom. 10. They lack cilia completely, so they have no cilia. No circulatory or respiratory system present. Gas exchange happens directly through the body surface, aerobic in free living and anaerobic in parasitic forms. तो जो फ्री लिविंग फॉर्म है उनमें ऑक्सीजन की एरोबिक का मतलब है वो रिस्पिरेशन जो एरोबिक होती है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होती है, और एनएरोबिक वो हो जहाँ पे ऑक्सीजन ना हो. तो जाहिर बात है जो एनिमल्स की बॉडीज में रहते हैं और पैरासिटिक है तो उनमें इनएरोबिक रेस्पिरेशन है. इंटरनल सिविलाइजेशन इज प्रेजेंट. सिविलाइजेशन का मतलब है देखिए हम यूनिसेलुलर से जा रहे हैं कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ. तो अभी तक जितने भी आपने एनिमल्स देखे उनमें आपने कोई सिविलाइजेशन नहीं देखी, हेड प्रॉपर नहीं देखा. अब यहाँ पर इंटरनल सिविलाइजेशन हो गई है, but externally the body look similar. No distinct head. ऐसे नहीं है कोई खास इनका सर या हेड रीजन या हेड आपको नजर आएगा, बट स्टिल देयर इज सिविलाइजेशन, इंटरनल सिविलाइजेशन हो गई है. एक्सटर्नली ऐसे बॉडी जो है बिल्कुल सिमिलर लुक देती है. yet the mouth is at the interior end. लेकिन इनकी जो माउथ है तो वो इंटीरियर एंड पर मौजूद है. They have a complete digestive system. For the first time आप देखेंगे कि ये फर्स्ट वो ऑर्गेनिज्म है जिनमें कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम आ रहा है. माउथ टू एनस, माउथ भी मौजूद है और एनस भी मौजूद है. कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब होगा कि माउथ और एनस दोनों मौजूद होंगे. एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इवोल्यूशनरी फीचर्स इन दीज क्रीचर्स. डाइजेशन इज एक्स्ट्रा सेलुलर, simple but effective. And the last, the mouth is surrounded by 6 lips. Their excretory system is simple, which is without flamecells or nephridia. So they don't have flamecells or nephridia for excretion. And in class Adenophoria, there are glandular cells, renate cells, which are present and which they use for excretion. तो रिनेट सेल्स जो है ये ग्लैंडुलर सेल्स होते हैं और ये इन एनिमल्स की हेल्प करते हैं एक्सक्रीशन में. द नर्व सिस्टम इज नॉट हाईली डेवलप्ड, but it includes a circumpharyngeal ring and longitudinal nerve cord. जो pharyngeal रीजन है उसमें एक सर्कुलर रिंग होता है नर्व्स का और उससे दो लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड निकलते हैं, एक डॉर्सल साइड पर और एक वेंट्रल साइड पर. Their sensory organs or their sense organs are poorly developed. Like they have mainly papillae or amphids in some animals near the mouth and phasmid near the posterior end. तो ये तीन किस्म के सेंसरी ऑर्गन जिनमें मौजूद है, पपिली, एम्फिड्स जो कि माउथ के करीब है और फेजमिड्स जो कि पोस्टीरियर एंड की तरफ है. और ये इसलिए क्योंकि ज्यादातर ये पैरासिटिक है और फिर उनको सेंस ऑर्गन की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती. जो सेक्सेस है तो सेक्सेस आर सेपरेट और गोनोकोरेस्टिक. इसका मतलब है सैंपल गोनोकोरेस्टिक का कि ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं इनमें दोनों सेक्सेस सेपरेट होते हैं, मेल अलग होते हैं और फीमेल अलग होते हैं. एंड यूजुअली मेल इज यूजुअली स्मॉलर देन द फीमेल. इसके अलावा जो इनके गोनेड्स हैं, सो गोनेड्स जो है प्रेजेंट इन दिम, और मेल जेनिटल डक्ट जो है इट लीड्स इनटू द क्लोएका और फीमेल जेनिटल डक्ट जो है इट हैज अ सेपरेट ओपनिंग. These organisms have amoeboid sperm cells. इनके जो sperm cells होते हैं वो amoeba like होते हैं. They have no asexual reproduction. Fertilization is internal in these organisms. Development may be direct or it may be indirect with an intermediate host. Various lateral lines and pores are present on the surface of the body.
Nematodes are actually one of the most numerous groups in the entire animal kingdom. Thousands of species are already known and many are still being discovered. But here is the challenge. Because of their huge diversity in structure and form, classification becomes a bit difficult. In 1933, Chetwood came up with a simple and important classification. He divided nematodes into two main classes based on the presence or absence of phasmids. These two groups are Phasmida or Aphasmida. Phylum Nematoda is divided into two classes. Class 1 is Aphasmida, also called Idianophoria. The key point here is phasmids are absent in these animals. Remember, phasmids are caudal sensory organs that act as chemoreceptors, helping nematodes detect chemicals and temperature and humidity. Instead, Aphasmida possess aphids, which are anterior sensory organs, and these are extremely important. Now let's talk about the function of aphids. They play a major role in chemoreception, detecting odors, salts, and pH, helping the organisms navigate its environment. In parasitic forms, they are crucial for host or prey recognition, basically helping the worm find its target. They also help in environmental sensing, responding to stress conditions, and even in sexual behavior by detecting pheromones. Structurally, aphids may also assist in attachment, especially in parasitic forms. Finally, remember these points. Excretory system is absent or poorly developed in Aphasmida. Mesenteric tissue are well developed and they have caudal adhesive glands which are present in Aphasmida. नाउ इसको एफेजमेडा इसलिए कहते हैं क्योंकि इनमें फेजमेट्स नहीं होते हैं. फेजमेट की जगह इनमें एम्फिड्स होते हैं. एम्फिड्स सेंसरी ऑर्गन्स हैं और फेजमेट्स भी सेंसरी ऑर्गन्स हैं. लेकिन एम्फिड जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं जो कि इस क्लास में हैं ये हेड की तरफ इंटीरियर एंड की तरफ मौजूद होते हैं और जो फेजमेट्स हैं वो कडल ऑर्गन है वो टेल की तरफ मौजूद होते हैं जो कि हम नेक्स्ट स्लाइड में दूसरे क्लास में डिस्कस करेंगे. Class 2 is Phasmidia, also called Serentia. The most important point here is that phasmids are present in these organisms. Phasmids are posterior sensory structures and they play an important role in perception. Another key feature is the presence of pore-like amphids, which helps distinguish this class from Aphasmidia. Unlike Aphasmidia, here the excretory system is well developed the presence of renate glandular cells. So remember this is as a major comparative point. Now look at the mesenteric tissue diagram here. In Phasmidia, the mesenteric tissue is weakly developed, while in Aphasmidia, these tissues are well developed. जो मेसेंट्रल टिश्यू है ये वो टिश्यू है जो इंटरनल बॉडी ऑर्गन को होल्ड करते हैं उनको पकड़ा हुआ होता है उनको होल्ड किया होता है which means internal support tissue is present but not as strong as or extensive as in Apis media. And finally, cuddle as adhesive glands are absent in this group, which is present in Apis media. So if you want to compare both classes quickly, class 2 Phasmidia have phasmids present, pore-like aphids are present, well-developed excretory system, weak mesenteric tissue, no cuddle adhesive glands. Branching tree classification diagram of phylum Nematoda. Phylum Nematoda is divided into two classes. Class 1 Aphasmidia, Adenophoria, and Class 2 which is Phasmidia or Serentia. Class 1 Aphasmidia is divided into 6 orders. There are 6 orders in this class और इसके examples जो है they are also given here. Class 2 Phasmidia or Serentia is divided into 10 orders. तो ऑर्डर के नाम जो है वो भी दिए गए हैं और साथ में हर एक के साथ एग्जाम्पल इज देयर सो go and draw this tree diagram in your practical notebooks. I have selected 14 specimens
जो कि आपने अपने प्रैक्टिकल नोटबुक में ड्रॉ करने हैं विद क्लासिफिकेशन। आप लोग इंटरनेट खोलें और खुद भी इन एनिमल्स को सर्च करें, इनके स्केच को सर्च करें। मे बी आपको मेरे इन स्केच से या इन डायग्राम से बेटर डायग्राम मिल जाए और आप वहां से इनको ड्रॉ करें। तो फर्स्ट वन इज एस्केरिस lumbricoides, Wuchereria bancrofti, ब्रोगिया मलाया, ओंकोसर्का वल्वेलस। इसके अलावा ड्रैकंकुलस medinensis है, ट्राइकेनेलिया स्पाइरेलिस है और नेक्टर अमेरिकैनस है। एंकाइलोस्टोमा ड्यूडिनेल है, लोआ लोआ है, एंकाइलोस्टोमा कैनम है। एंकाइलोस्टोमा कैनम दोबारा दो स्ट्रक्चर इसके आए हुए हैं, तो आप दोनों ड्रा कर सकते हैं। इसी तरह एंटेरोबियस वर्मिकुलरिस है, ट्राइक्यूरस ट्राइक्यूरा, वेपवर्म्स, स्ट्रोंगाइलस सेडेंटेटस, Desmoscolex cameronensis. Thank you so much for watching and listening. Please like and subscribe to my channel. The link is given below. If you have any question, please drop your question in the comment section. I will respond to each question. Keep learning, keep watching.